सूचिकाय सस्मितवती। नमस्कार। आद्य समाचाराय कार्यक्रमे भवतः स्वागत करोमि। बालकृष्ण कौशिक अस्मि। अद्य दिनांक अस्ति 23 मे 2025। अद्यतन विश्वस्य च भारतदेशस्य च प्रमुखन् वार्तासार शृणुम। 1. प्रधानमन्त्रिण बीकानेर दर्शनम्। सूचिका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज प्रातः काले बीकानेर नगरं प्राप्तवान्। तस्य हेलिकॉप्टर नालवायुसैनिक स्थले 9 च 55 समुपेतम्। स अनेकेषा योजनाना उद्घाटनं कृत्वा अपि च नवीनाना योजनाना शिलास्थापनं करिष्यति। जलप्रदाये, मार्गनिर्माणं, विद्युत् प्रकल्पाय च तत्र प्रमुखाः सन्ति। 2. तालिबान भारत सखित्वाय इच्छति। सूचिका। तालिबान संघ भारतदेशेन सह मैत्री स्थापनं कर्तुम् इच्छति इति निवेदितम्। व्यापार सम्बन्धान् च कूटनीतिक सहकारं च प्रस्थातुं ते इच्छन्ति, परन्तु भारत सर्वकारेण अपि अद्यावधि कोऽपि अधिकृतः प्रत्युत्तरः न दत्तः। 3. पाकिस्तान सेनाध्यक्षस्य पुरस्कारः। सूचिका। पाकिस्तान देशस्य सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर विदेशदौर्य विशेष सम्मान प्राप्तवान्। अनेके विचारकाः एष सम्मान सामरिक लाभः इति वर्णयन्ति। भारतस्य दृष्ट्या एषा घटना सजगत्वाय कारणं भविष्यति। 4. मध्यप्रदेशे वन्यजीव संरक्षणाय बैठक। सूचिका। भोपाल नगरे मध्यप्रदेश राज्यस्य मुख्यमंत्री मोहन यादव वन्यजीव बोर्डस्य सभा अध्यक्षतया अन्वितवान्। तस्मिन्नेव सम्मेलने पंचनवाना व्याघ्रविहाराणां स्थापनेन सह मानव वन्यजीव संघर्षस्य समाधान विषये चर्चिता जाता। 5. IPL 2025 प्ले स्पर्धा। सूचिका। क्रीडाप्रेमिणः आनन्देन युक्ताः सन्ति यतः IPL 2025 प्रतियोगिता समापनावस्थायाम् आगता। अद्य राजस्थान रॉयल्स च कोलकाता नाइट राइडर्स च मध्ये स्पर्धा भविष्यति या प्लेऑफ पदवी निर्णेष्यति। 6. ब्रिटन देशेन फिलिस्तीनस्य मान्यता। सूचिका। ब्रिटन देशेन फिलिस्तीन राष्ट्रं स्वतंत्र राष्ट्ररूपेण मान्यकृतम्। एषा घटना विश्वकूटनीत्या महत्वपूर्णा गण्यते। भारत देशे उभयपक्षयोः संयम शान्ति च प्रार्थयति। 7. मौसम वृत्तीय। सूचिका। कि स्यात् अद्य दिनस्य वायुमण्डल वृत्तीय। दिल्ली प्रदेशे लघुवृष्टिः संभाव्यते। तापमानम् 38 अंशपर्यन्तम्। मुम्बईनगरे उष्णता च आर्द्रता च अतिवर्धिता। जयपुरे दिवसा स्वच्छे, पर मध्याह्ने आतपेन दाह संभाव्य। समापन सस्मितवती। सूचिका। एते आसन् अद्यतन प्रातःकाले मुख्य समाचाराः। अपराह्ने पुनरागमिष्याम नूतन वृत्त्या सहितम्। यावत् तावत् आद्य समाचाराः इति कार्यक्रमं पश्यन्तु। बालकृष्ण कौशिक भवन्तः प्रणमामि। शुभ दिनमस्तु।